Good evening, everyone. मैं हूं आशीष नारंग and welcome to the second season of the Growing Professional Show. This is the first episode of the Growing Professional Show, and I'm so happy to have Sanskriti Pandey today with me as a guest. Sanskriti is a CA finalist. She is a gold medalist of SRCC, and she was a part of LinkedIn Creator Accelerator program, and she nailed it. I have seen her growing leaps and bounds. बहुत ही फास्ट ग्रो किया है लिंक्डइन पे संस्कृति ने एंड लिंक्डइन कैन बी a gold mine for opportunity for everyone. Either you are a student looking for internship, you are a fresher looking for a job, you are a business owner looking for business opportunities, you are a marketer looking for a lead. So जिस भी domain में आप हो, LinkedIn can be game changer. And to help you change your game, today I'm so glad to have Sanskriti with me. संस्कृति से जानेंगे कि उनके क्या सीक्रेट्स हैं, how she has grown so much so fast on LinkedIn, and काफी सारा अच्छा कॉन्वर्सेशन होने वाला है एंड पूरा पॉडकास्ट आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है. So join me and welcome Sanskriti on the podcast. Hello, Hi Ashish. Sanskriti, Thank welcome to you. the Growing Professional Show. So nice to Thank you. see you Thank you. here, and I'm so glad that you found time to do this podcast, the season 2, episode 1. The pleasure is all So mine. I before knew we it's go not ahead, mine. Sanskriti, little bit would like to know more about you in a brief. Yeah. Okay, so as you mentioned, I graduated from SRCC and I have a gold medal, yes. So right now I am a CA finalist. That means I am pursuing chartered accountancy at final level and I'm working as an audit analyst at Grant Thornton. That's one of the big firms of our industry. And along with that, I have been at Women Economic Forum as a speaker. I also delegated at Harvard Asia Conference 2022. And I've been doing my bit on LinkedIn as well. I have around 48K followers, and I just work every day to provide them with good content. सबका भला हो मेरा भी भला हो. So 48K followers seems a lot. So because you are expert on LinkedIn, so we would like to know from your side, अगर आज आपका day 1 होता LinkedIn पे, so what you would have done differently? आप कैसे ऐसी 5 चीजें आप क्या डिफरेंट करते जिससे आपको बहुत ज्यादा ग्रोथ मिलती, या बहुत ज्यादा आपने शुरू में कुछ मिस्टेक्स की होंगी, वो क्या अवॉइड करते आप 5 मिस्टेक्स? ओके, सो मैं ये बता दूं कि जो मेरी लिंक्डइन जर्नी थी वाज एंटायरली अनप्लान्ड, अनइंटेंडेड, अनएक्सपेक्टेड. सो इट्स नॉट लाइक कि मैं लिंक्डइन पे एक कंटेंट क्रिएटर बनने के लिए आई थी. दैट वाज नॉट द केस. आई जस्ट फाउंड अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे मैं अपनी बातें शेयर कर सकती थी एंड दैट्स व्हाट आई डिड. बट ऑफ कोर्स ओवर 1.5 मोर देन 1.5 years जो मैंने लिंक्डइन पे बिताए हैं, ऑब्वियसली आप एक लर्निंग कर्व होती है, आप लर्न करते हो एंड ऑब्वियसली आप दूसरों को बोलते हो कि जिससे वो बेटर बेनिफिट कर सके आपके एक्सपीरियंस से. तो अगर मैं आज डे 1 पे होती, सबसे पहली चीज मैं फर्स्ट डे ही अपनी प्रोफाइल अपडेट रखती. द लिंक्डइन प्रोफाइल स्टार्टिंग फ्रॉम द कवर to the bottom summary or endorsement वाला section, I would have completed every single thing. जो मैंने बाद में किया, when I started noticing कि actually people are visiting my profile, which should not be the case. आपको अगर अपना एक LinkedIn पे पहचान बनानी है, you'll have to keep yourself updated. सबसे पहली बात. दूसरा, मैंने एंगेजमेंट्स ज़रूर स्टार्ट की थी. मतलब आई ऑलवेज यूज्ड टू कमेंट ऑन अदर पीपल्स पोस्ट्स एंड एटसेट्रा. दैट्स अ प्रैक्टिस आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट कि आपको हमेशा करनी चाहिए. आप इट्स अ क्विट प्रो क्यो, यू नो. आपके पे भी एंगेजमेंट फिर आएगी, आप भी करोगे तो. प्लस उससे ये होता है कि जब आप एक्चुअल में कोई पोस्ट पढ़ते हो, आप कमेंट करने के लिए खुद भी तो कुछ पढ़ते हो, राइट? उससे आपको भी नॉलेज मिलती है, आप भी लर्न करते हो, कुछ ना कुछ अच्छा होता है. सो नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ कमेंटिंग बट खुद के कंटेंट कंज्यूम करने के लिए भी. कंटेंट क्रिएटर बनने से पहले आपको कंटेंट कंज्यूमर बनना पड़ेगा. तभी आपको पता चलेगा कि एज अ कंज्यूमर लोग कैसे क्या चाहते हैं इन अ कंटेंट. नेक्स्ट अगर मैं कुछ कहूँ तो ऑब्वियसली मैं यही कहूँगी कि जो आपकी प्रोफाइल पिक्चर है, लोग होते हैं वो उसे अपडेट नहीं करते हैं,
प्रोफाइल में अपनी डिटेल्स डालना इज वन थिंग एंड प्रोफाइल पिक्चर लगाना इज अनदर. सो ऑब्वियसली लोग स्ट्रगल करते हैं सिंस मैं भी वर्क फ्रॉम होम से थी 2 साल. सो आई रियली कुडंट गेट दोज प्रोफेशनल पिक्चर्स बिकॉज मैं ऑफिस ही नहीं जा रही थी. सो एग्जैक्टली वो कैसे द ब्लेजर वंस. तो ठीक है, आई गेट इट कि वो नहीं चलती. बट इफ यू विजिट माई प्रोफाइल देयर इज अ नॉर्मल फोटो विद वाइट बैकग्राउंड. लोग क्या करते हैं, दे पुट अप अ सेल्फी, या बाहर है कहीं मार्केट प्लेस में है, उन्होंने वही फोटो लगा दी. सो मतलब आप हाइब्रिड कर सकते हो बट एकदम में कैजुअल नहीं जा सकते. सो एक ये है. एंड एक और चीज मैं जरूर कहना चाहूंगी कि लिंक्डइन न्यूज हो गया, लिंक्डइन न्यूज इंडिया, लिंक्डइन न्यूज एशिया एंड लिंक्डइन फॉर क्रिएटर्स पेज, ये सारे पेजेस एग्जिस्ट करते हैं ऑन लिंक्डइन टू हेल्प क्रिएटर्स ग्रो. प्लस न्यूज वाले पेज तो इज अमेजिंग. आई मीन यू कैन ऑल्सो गेट योर पोस्ट फीचर्ड देयर. सो वो एक बहुत ही रिलेटेबल टॉपिक्स पे स्टार्ट करते हैं, पोस्ट करते हैं, लोगों की पोस्ट रीशेयर करते हैं. सो एक वो रिकॉग्निशन भी होती है. प्लस यू ऑलवेज नो, अगर आप वेबसाइट पे भी जाते हो, लैपटॉप से लॉग इन करते हो, आपको राइट में दिखेगा कि एग्जैक्टली कौन से टॉपिक्स आजकल ट्रेंडी चल रहे हैं. सो ट्राई टू क्रिएट कंटेंट ओवर दोज टॉपिक्स अगर वो आपका नीश है तो. सो दीज आर सम ऑफ द टिप्स दैट आई वुड रियली लव टू गिव पीपल अगर वो डे 1 पे अपना लिंक्डइन स्टार्ट करते हैं तो. वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंटर संस्कृति. संस्कृति, आई वांट टू नो, आपने प्रोफाइल पिक्चर के बारे में बताया, कवर पिक्चर के बारे में बताया, बट व्हाट हैपेंस इज आफ्टर दीज टू एरिया सबसे ज्यादा जो अटेंशन जाता है वो जाता है प्रोफाइल समरी. प्रोफाइल समरी लिखना ना बहुत ही ज्यादा कैची हो सकता है बिकॉज इट्स अ ट्रिकी थिंग. आपके पास बहुत कम करेक्टर्स हैं और आपको अपना बेस्ट वर्जन प्रेजेंट करना है. सो हाउ टू राइट अ इंटरेस्टिंग समरी? I'll tell you. So 2 टाइप की समरीज मैंने, लाइक हेडलाइंस राइट, जिस पे कम यस. कैरेक्टर्स होते हैं. तो मैंने यस. 2 टाइप के देखे हैं. एक होते हैं मेरे जैसा, जिस पे व्हाट आई डू इज, ये मैंने बहुत ज़्यादा नोटिस किया है और मेरी खुद की भी ये प्रैक्टिस है. जैसे मेरे आई हैव अराउंड 4,000 रिक्वेस्ट पेंडिंग. तो अब रिक्वेस्ट आती है, सो आपकी सबसे पहले नज़र नाम पे जाएगी. बट नाम शुड नॉट बी अ क्राइटेरिया राइट. आप बस ये नाम प्यारा लग रहा है तो आप उसकी कनेक्शन रिक्वेस्ट नहीं एक्सेप्ट करोगे. व्हाट यू Agree. लुक एट इज द हेडलाइन, द बायो, बेसिकली जो हेडलाइन होती है. सो जितनी वो क्रिस्प हो, ऑन द पॉइंट हो, आपको बताए कि ये इंसान आपके नेटवर्क पे कैसे वैल्यू ऐड कर सकता है, अगर वो आपके हेडलाइन ने काम कर दिया, हो गया. एवरीवन वुड एक्चुअली एक्सेप्ट योर रिक्वेस्ट अगर आप आगे से भेजते हो. फॉर एग्जांपल जैसे आई नो कि 6 months लेटर या 5 months के अंदर आई विल लुकिंग फॉर जॉब्स. तो आई नो दिस फैक्ट. तो जब भी किसी एचआर प्रोफेशनल की मेरे पास रिक्वेस्ट आती है, आई एक्सेप्ट देम. पर वो मुझे कैसे पता चलता है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं उनकी प्रोफाइल जाके चेक करूं. अगर उनकी प्रोफाइल पे एचआर प्रोफेशनल लिखा है, मैं एक्सेप्ट कर लेती हूँ. या मे बी वो किसी अच्छे कंपनी में है, फर्म में है, वो मतलब उनकी क्रीडेंशियल्स आर pretty well visible on the bio. That means the headline is doing its job. तो आप कौन से ब्रांड से एसोसिएटेड हो, आपका कोई एक मेजर अकम्पलिशमेंट हो, प्लीज मेंशन इट इन द बायो. जैसे मेरा सबसे पहले एसआरसीसी गोल्ड मेडल आता है. मैंने एक हायरार्की बना रखी है, ठीक है, एसआरसीसी गोल्ड मेडल इज समथिंग आई बिलीव मेरी रिज्यूमे में अगर मैं जाऊंगी, मेरे बायो में वैल्यू ऐड करता है सबसे ज्यादा. सो आई पुट इन फर्स्ट. बट देन ऑब्वियसली मैं लिंक्डइन क्रिएटर हूँ, तो लिंक्डइन क्रिएटर एक्सेलरेटर प्रोग्राम है, लिंक्डइन क्रिएटर्स प्रोग्राम है. आई हैव मेंशन एवरी सिंगल थिंग इन माय बायो. कि छोटा छोटा वो हार्वर्ड एशिया तो एच पेयर, मतलब एनीथिंग, आई जस्ट हैव पुट इन एवरी सिंगल थिंग. बस छोटा कंसाइज वे में. एक ये हो गया. सेकंड होता है, आप भी जानते हैं, जतिन सैनी इज वन ऑफ माय फेवरेट कंटेंट क्रिएटर्स ऑन लिंक्डइन. सो उसकी बायो चेंज होती रहती है. सो राइट नाउ आई बिलीव आई इट्स समथिंग लाइक आई कैन हेल्प यू ग्रो और रीच 1 million व्यूज और समथिंग. सो इट्स अ वेरी कैची टाइप ऑफ हेडलाइन कि अगर कोई लिंक्डइन ग्रोथ एक्सपोर्ट ढूंढ रहा है, तो वो उसकी जब भी ही पुट इन दैट कीवर्ड, बायो में सबसे पहले उसका ही नाम आएगा. ही नोज द एल्गोरिदम कि लिंक्डइन एक्सपर्ट ग्रोथ उसकी बायो में ही लिखा है, सो लिंक्डइन विल सजेस्ट हिम.
Mhm. तो बस वही लेके इट गोज आगे, तो इसलिए वो ऐसी बायो प्रेफर करते हैं। तो ये दो टाइप की बायो है, या तो व्हाट डू यू कैन पुट दैट ऑन योर बायो, और व्हाट आर योर अकॉम्प्लिशमेंट्स और योर क्रेडेंशियल्स आर। Very interesting. Like you are given both the perspectives, and depends like what you are seeking. You are seeking something long एग्जैक्टली। term. You want to optimize as per the algorithm, or you want to create your value in front of the ट्रू। visitor of your profile. Very interesting. ट्रू। So, Sanskriti, this was the maybe headline section, and when we come to about section, wherein we have a long space, wherein we can put whatever we want to put in. वहां पे मैंने देखा है काफी लोगों को दे जस्ट पुट नथिंग और दे जस्ट पुट वन और टू लाइनर्स बट आई फील ट्रू। दैट कुड इफ स्ट्रक्चर्ड वेल can be a game changer, right? So if you can give a structure kind of thing, what 3 to 4 paragraphs or 3 to 4 sentences can create a great impact on the reader, so what would be that? ओके, सो आई टेल यू, सबसे पहली बात कि अबाउट सेक्शन में आपको सारी चीज़ें लिखना क्यों ज़रूरी है। सो आई टेल यू एन एग्जांपल। सो आई हैव दिस टीचर, सो शी डिड समथिंग इन स्पेनिश, some course or something. So she just casually mentioned in her bio. But once she actually got a Spanish client, उनके उसके वजह से, लाइक उनके अबाउट समरी की वजह से। व्हाई? बिकॉज दैट पर्सन एक्चुअली पुट इन द कीवर्ड स्पेनिश इन द लिंक्डइन सर्च, एंड उसने फिर वो दो तीन कीवर्ड्स के साथ मैच करके उनकी प्रोफाइल उन्हें सजेस्ट की। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। लिंक्डइन सिर्फ हेडलाइन बायो या कुछ आपकी ऑर्गेनाइजेशन नहीं, बट ही एक्चुअली इट एक्चुअली रिलेट्स टू योर अबाउट सेक्शन एज वेल। आप उसमें क्या लिखते हो, वो कीवर्ड्स वो कैच कर लेता है, and that's how you improve your search appearances. सो अबाउट सेक्शन में लिखना बहुत ज़रूरी है, एंड इसमें आई वुड से कि मुझे धैर्य गंगवानी इज अनदर वन ऑफ माय फेवरेट कंटेंट क्रिएटर्स। उनका अबाउट सेक्शन बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है। उन्होंने अपनी पूरी की पूरी बिजनेस प्रोफाइल दे दी है, दैट दीज आर द थिंग्स शी हैव डन, दीज आर द थिंग्स, दीज आर द सर्विसेज शी प्रोवाइड। और आगे और पीछे उन्हें दो तीन चीज़ देखनी थी। इफ आई कम टू माई सेल्फ, ऑब्वियसली अभी मेरे पास, सिंस आई एम स्टिल अ स्टूडेंट, मेरे पास वर्क एक्सपीरियंस इतना नहीं है, आई एम जस्ट एन आर्टिकल, राइट? सो मैंने वो भी मेंशन किया है, बट आई हैव आल्सो मेंशन माय अकॉम्प्लिशमेंट्स, और मैंने, आप मुझे लाइक सेशंस कहाँ बुक कर सकते हो, एंड अगर मैंने कहीं डेलीगेट किया है, फिर लिंक क्रिएटर प्रोग्राम के बारे में जो भी मैंने अपनी हेडलाइन लिखी, उसको मैंने सेंटेंसेस में फॉर्म करके अबाउट सेक्शन में डाल दिया, कि कोई भी चाहेगा अगर उसे मेरे पॉडकास्ट के लिए भी अगर बायो देखनी हो, he can just visit my about section and pick up whatever information he wants. Basically, it's my introduction, I would say. So about is very important, and अगर किसी को लिंक्डइन क्रिएटर्स सर्च करेगा तब भी मेरा नाम आएगा, SRCC सर्च करेगा तब भी मेरा नाम आएगा, CA सर्च करेंगे तब भी मेरा नाम आएगा। I've used all the important keywords, जिसकी वजह से मेरी सर्च अपीयरेंसेस बेटर हों। राइट, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जो आपने एक लाइक कह सकते हैं सीक्रेट रिवील किया है. इट इज नॉट ओनली अबाउट टेलिंग योर स्टोरी एंड गिविंग योर एलिवेटर पिच, बट इट हैज मोर टू डू विद द लिंक्डइन एल्गोरिदम, how Yes, that will use your profile, those keywords from that about section, and showcase your profile to the like leads, and they bringing the opportunities. Very absolutely. interesting. And specifically the example you had mentioned about the Spanish language, because Yes, the client wanted somebody who knows Spanish, so that opportunity arrived. Great. So absolutely. coming to the next part of this, profile optimization हो गया, and अभी हम जो discussion कर रहे हैं attracting leads and opportunities. So how to get in touch with the right people, how to attract right people to the profile. So one part you already shared, that optimizing your about section and bio section. What else can be done so that more and more people are inbound, coming as inbound leads to Right. you? Yeah. Okay, so I believe for inviting inbound, correct inbound leads, first you'll have to go outbound. Why I'm saying is because जब आपको रिक्वेस्ट आती है, दैट्स नॉट व्हाट्स इन योर कंट्रोल। आपको रिक्वेस्ट कोई भी करता है, बट इसलिए आप कनेक्शन रिक्वेस्ट कभी एक्सेप्ट करते हो, नहीं करते हो।
फिर वो फॉलो कर देते हैं, बट दैट बिकम्स योर ऑडियंस. बट व्हेन यू नो व्हाट योर टारगेट ऑडियंस इज, you'll have to go out first. Per week we get 100 requests limit, right, on LinkedIn. So you'll have to go, you'll have to search people which actually resonate with whatever audience you want on your profile. आपको जाके you'll have to send out requests at first. मैं नहीं बोल रही हूँ 100 भेजो, maybe 20, maybe 30 per week. The people you want to be in your network. And not just a request, a personalized invite. That's a very cool feature LinkedIn has. And it actually shows that the person who is sending the request now has actually put in some extra effort आपको रिक्वेस्ट भेजने के लिए. सो इट्स समथिंग दैट पीपल अप्रिशिएट. आई अप्रिशिएट, आई एम श्योर यू मस्ट अप्रिशिएट टू. सो मैं अगर अपनी रिक्वेस्ट जिन्हें लाइक क्रिएटर्स को आती ही है, सो अगर मैं देखती हूँ, आई जस्ट लुक हैव अ लुक एट इट. बट अगर किसी ने प्रोफाइल लाइक प्रोफेशनल ये इनवाइट भेजा है, पर्सनलाइज्ड इनवाइट, मैं पक्का उसका मैसेज खोल के देखती हूँ एंड यूजुअली मैं एक्सेप्ट भी कर लेती हूँ कि भाई इंसान ने थोड़ी मेहनत तो की है. सो एक तो ये तरीका है कि आपको फिर आप जब रिक्वेस्ट भेजेंगे तो वही लोग आपके एक्सेप्ट करेंगे जो आप चाहते हैं, वही आपके नेटवर्क में आएंगे. एंड जब वो आपकी पोस्ट से एंगेज करेंगे, यू विल हैव सिमिलर ट्रैफिक ऑन योर प्रोफाइल. प्लस आई विल ऑल्सो से कि जैसे इवेंट्स होता है, लिंक्डइन लाइव्स हो गया, लिंक्डइन ऑडियो लाइव्स हो गया, या कोलैबोरेशन पोस्ट जहाँ पे दो तीन क्रिएटर्स, दो तीन लोग मिलके एक पोस्ट करते हैं और समथिंग, या मे बी एक इवेंट पे बोलते हैं ना, उससे बहुत ज्यादा ट्रैक्शन आता है. हाउ, आई विल टेल यू. Jatin Saini, as I mentioned, so we went on his podcast. So by the end of that 40 minutes podcast, audio live, LinkedIn audio live, उसके लिए कोई external platform भी नहीं चाहिए. उसके बाद all of us were like up by 100 followers in those 40 minutes. Why? Because अगर हम चार लोग invited थे plus Jatin, that makes five of us. हम पांचों की नेटवर्क को वो नोटिफिकेशन गई थी, भले ही उन्होंने हमारा पोस्ट इवेंट का देखा ना देखा, उन्हें नोटिफिकेशन गई that Sanskriti is speaking at this event, Jatin is speaking at this event, and like that. And जिसका मन किया obviously they'll jump in, देखेंगे क्या हो रहा है. And sometimes people stay, and the people who actually have an intellectual side to them, they love to listen. मैंने ये नोटिस किया है. सो वहां रह के बस सुनेंगे, एंड जब सुनते हैं मे बी वो दे सुनने जतिन को आए थे, बट उन्हें आप भी पसंद आ गए, आपके व्यूज पसंद आ गए, सो दे विल जस्ट हिट अ फॉलो बटन, या दे विल Agreed. सेंड यू इनवाइट. सो दीज आर सम ऑफ द वेज दैट यू कैन एक्चुअली इनवाइट लीड्स इनबाउंड. थोड़ा आउटबाउंड जाके, थोड़ा कोलैबोरेशंस करके, दैट्स व्हाई कोलैबोरेशंस वर्क. एंड प्लस Great. आई वुड से कंसिस्टेंटली वो करें, सो इट वुड हैपन. करते रहें, वैल्यू एडिंग Very, very interesting, Sanskriti. Sanskriti, last question, because we are there are a lot of things to learn. There are a lot of things to share, but to keep it very like compact in time. One last question I want to ask you: how to reach out? Because you specifically mentioned when somebody is reaching out to you with a specialized message, you accept, and that could be a opportunity for him. For example, let's example, if you're a founder, if somebody is reaching out to you through a DM for funding, or maybe just to build a relationship at the beginning, or maybe somebody is reaching out for a job, what is the best way? Because I get a lot of messages: hi sir, if there's any opportunity in your company, 100 messages like and this every that's week. like a turn We off. cannot Yeah, we cannot reply to them all, and those are the people I have seen. Like, even if somebody has sent us a message, and we even try to find out something in our network, and when we try to go back to them, they are no more interested. So what right. will be the best strategy to while reaching out to people who have influence, if you can suggest that? Okay. So I practice this thing that whenever I am sending a personalized invite, so one thing I definitely mention is that what I liked about their profile. So that shows कि the person who's sending the request has actually gone through your profile, and वो ऐसे ही randomly cold invites नहीं send कर रहे हैं. The person is actually looking into the person's profile जिन्हें वो अपने नेटवर्क में चाहते हैं. तो एक तो दिखता है कि इंसान ने efforts किए हैं.
सेकेंडली, इंसान को सच में जेन्युइनली ही फाउंड समथिंग वर्थ अप्रिशिएटिंग मेरी प्रोफाइल पे. सो ऑब्वियसली एवरीवन लव्स फ्लैटरी, ये सबको पता है. तो ठीक है, तो थोड़ा हम भी यूज कर लेते हैं. एंड थर्ड, definitely we should mention that what we are, what we do, maybe in a line, so that उन्हें भी लगे कि this person accepting this person's request can actually add value to my network as well. या maybe ये इंसान कभी मुझे helpful साबित हो सकता है in future. So ये तो पक्का. And even if you are texting because of the job, for example, मुझे job चाहिए and मैंने ये steps follow किए, but कभी भी first message में you can't ask for a favor. No, that doesn't look good. इंसान accept नहीं करेगा, वो reply भी नहीं करेगा, and करेगा भी तो rudely भी हो सकता है. So first में मत मांगो. जब एक दो messages exchange हो जाए and you can show कि ठीक है, it's not only the job that you always wanted, but you know you wanted to develop a connection, then you can drop bade aaram se that hello, just one thing, I just heard that there is this vacancy or something, just let me know if something ever comes up. I would love to work with you, I would love to work in your organization. The tactics होती है, पर सामने वाले को पता होता है कि ठीक है, इसे जॉब ही चाहिए थी, but he chose a crafty way. He didn't come to the point at Bounce. once. Yeah. And एक होता है, एक तरीके से पूछा तो भाई क्यों नहीं, हेल्प करेंगे. तो लिंक्डइन पे Right. हम हेल्प करने के लिए बैठे हैं, तो करेंगे. Very interesting. Very interesting. So basically, it's not always unless you build a rapport with a person. Don't ask for favors. It's a very interesting Absolutely. fact you have shared. So Sanskriti, like this 20-25 minute session would have, is very interesting session. We got to know a lot more things about LinkedIn and how it works. And I have so many questions to ask, but considering the time limit, will not go beyond. And I want to thank you so much for being on the very first episode. Although the audience is not here today that much, very less than it's expected, but nevertheless, this message people will listen to and I'm pretty sure they will take action on it. And yeah, it was interesting. It was really nice to have you on this first episode. Thank you so much for having me. It's always a fun to share whatever you gain, as knowledge. So, Yes. absolutely. Thank you. Thank you so much, Sanskriti. And the audience who are not following Sanskriti yet on LinkedIn, go on the profile. I will share her profile link in the description section. Do follow her for more creative ideas, more LinkedIn techniques, and she's superb on her craft. Sorry. Great. Thank you so much, Sanskriti, for joining in. Thank you so much.